अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? लाउड एंड क्लियर ना? सबर नहीं है यार तुम लोगों में से यार, पाकिस्तान की आवाम में तो सबर नहीं है। सबर रखो, सेटिंग करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इट टेक्स टाइम। थोड़ा आपके भाई को पता है ना, परफेक्शन का कीड़ा है इस वजह से। कैमरा भी लगा रहा, मैं कैमरा भी लगा रहा हूँ दूसरा। आई एम गुड। वर्कशॉप की बातें भाई क्लास में डिस्कस होंगी। राइट नाउ दिस इज अ पासिबल क्लास, तो it's basically a pastoral class, so no workshop. I'm doing good जो है, थैंक यू। यार आपका भाई प्रमोशन करने में ही तो बेस्ट है। यार आप लोगों के लिए हमने ना रिलेटिवली बहुत ही ना कम प्राइस रखी है, डोंट वरी। पढ़ना स्टार्ट करें। थैंक यू जनाब, आई एम डूइंग वेल, यस। कम टू द पास्ट पेपर्स, पास्ट बुक 2 ज्योग्राफी करेंगे हम, सॉरी पास्ट बुक 1। सो वी आर गोइंग टू डू ज्योग्राफी। आज वाटर रिसोर्सेस को निपटाते हैं। वर्कबुक 1 खोल लें प्लीज। वर्कबुक 1 and page number 54. वालेकुम सलाम जुनैद, कैसे हैं आप लोग? चलो भाई आओ, एंड मैं हूं। वो आपका भाई है, क्या करें हम? लगता है आपका भाई हॉट, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, मेरी तारीफें बंद करें। हमने थोड़ा सा है ना पढ़ाई पे फोकस करें। सो इट्स वर्कबुक 1 एंड पेज नंबर 54। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, यूट्यूब की हाल देख लेते हैं हम। हाँ, यूट्यूब पे ही ब्रॉडकास्ट हो रही है। चलो भाई, वर्कबुक 1 पेज नंबर 54, चैप्टर नंबर 3, water drainage and irrigation. Which crop is expected to have a decrease in the water demand by 2025? ओपन कर दिए चैट, सिर्फ आंसर्स बताओ। किस क्रॉप का वाटर डिमांड कम हो रही है? यस, राइस का कम हो रही है। इट्स राइस, राइस का कम हो रही है। ठीक है, फेयर इनफ। आगे चलते हैं। बाय हाउ मेनी मिलियन एकड़ फीट इज वाटर डिमांड फॉर वीट expected to have increased between 1990 and 2005? वीट की अगर बात करें तो 1990 में वीट की वैल्यू है 26, तो 1990 में वीट की वैल्यू हो गई 26। और अगर 2005 की देखें, 2025 की वैल्यू 58 है, 2025 की वैल्यू 58 होगी। तो 26 और माइनस 58 कर ले, कितना होता है भाई? 58 माइनस 26, 32 हो गया भाई। 32 या 33 आंसर होगा, 32 या 33 मिलियन एकड़ फीट। ग्राफ की क्लैरिटी के ऊपर होगा, ठीक है ना? अच्छा, why is an increase in water demand expected for wheat? अगर हम बात करें तो वीट के लिए एक्सपेक्टेड डिमांड क्यों इंक्रीज हो जाएगी बताएं? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। मैं इलेबोरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं पॉइंट से रहा हूं। मोर पॉपुलेशन, सो मोर डिमांड। मोर पॉपुलेशन हो गई है भाई तो मोर डिमांड हो गई है। और बताएं, इंपोर्ट को कम करना, एक्सेलेंट पॉइंट। टू रिड्यूस इंपोर्ट, टू रिड्यूस इंपोर्ट, सो प्रोडक्शन विल इंक्रीज। सही है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। एक्सीलेंट पॉइंट, स्टेबल क्रॉप है,
स्टेबल क्रॉप है तो भाई स्टेबल क्रॉप हर कोई खाता है स्टेबल क्रॉप। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। बुक वन, टू रिड्यूस फेमाइन, टू रिड्यूस फेमाइन। बुक वन पेज नंबर 54, बुक वन पेज नंबर 54। फैजान मलिक पार्ट टू की कैलकुलेशन हुई है बेटा, पार्ट टू की कैलकुलेशन आप देख लो। बोले 1990 और 2025 में से बीच में कितना वो हुआ है, डिफरेंस आया है, तो हमने वैल्यूज निकाल के माइनस किया है। चले इब्राहिम, डोंट स्पैम, स्पैम नहीं करें बेटा चैट, मुझे निकालना पड़ जाएगा ग्रुप से। नेक्स्ट आ जाते हैं। Why is much smaller increase in water demand expected for cotton? तो कॉटन की डिमांड कम हो गई है, लेस डिमांड ऑफ कॉटन। हम कॉटन ग्रो ही नहीं करें और सही है। और डिजीजेस हैव इंक्रीज, मोर डिजीजेस, तो हम कॉटन ग्रो ही नहीं करते। मोर डिजीजेस, सो नॉट ग्रोइंग कॉटन। और कॉटन इज सेंसिटिव, कॉटन इज सेंसिटिव, कॉटन को वैसे ही कम पानी चाहिए होता है। सही है। रेनफॉल इज सफिशिएंट, रेनफॉल इज सफिशिएंट, सही है। और एनीथिंग एल्स? सही है। नहीं मायशा, ऐसा नहीं होगा। What are perennial canals and why they are better for farming than inundation canal? Perennial canal वो canal होता है जो water को supply करता है throughout the year। और कहां से supply करता है? डैम से supply करता है। लेकिन अच्छा, लिखने में भी तो फोकस करें। Perennial canal is a canal which supplies water throughout the year from डैम्स। और ये क्यों बेटर है इनंडेशन कैनाल से? क्योंकि इनंडेशन कैनाल पानी को सिर्फ तभी डाइवर्सिफाई करता है जब रिवर ओवरफ्लो करती है। इट इज बेटर देन inundation canal, it is better than inundation canal because they only provide, because they only provide water when the river floods। तो ये सिर्फ तभी पानी प्रोवाइड करती है जब रिवर क्या करती है? फ्लड करती है। It only provides water when the river floods। सही है। How may irrigation damage the soil? इरिगेशन जो है वो सॉइल को कैसे डैमेज करेगी? जब आप ज्यादा एक्स्ट्रा पानी देंगे तो जमीन पानी को एब्जॉर्ब करेगी, और जब जमीन पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो वाटर टेबल राइज करेगी, और जब वाटर टेबल राइज करेगी तो वाटर लॉगिंग होगी, और अगर वाटर लॉगिंग होगी तो सैलिनिटी होगी। आ जाए मेरे कीबोर्ड के मुजाहिदीनों, लिखना भी स्टार्ट कर दें, लिखना भी साथ साथ है, ठीक है? शुरू हो जाए प्लीज, लिखे अपने पास। when when access water is provided, ये provided कर दे, when excess water is provided to the soil, the land absorbs the water, comma, slowly and gradually the water table rises,
Slowly and gradually the water table rises. Full stop. A time will come when water will float on the surface. This is known as waterlogging, and it will absorb, yeah, and it will damage the soil and it will damage the soil, and it will damage the soil, and it will damage the soil. How may this damage be overcome? मैं इस डैमेज को कैसे ओवरकम कर सकता हूं? मैं इस डैमेज को ओवरकम कर सकता हूं ट्यूबवेल्स लगा के। और क्या कर सकते हैं? यूकेलिप्टस ट्रीज, यूकेलिप्टस ट्रीज और लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। इसकी इलैबोरेशन कर लीजिएगा प्लीज, या मैं आगे इलैबोरेशन करवा दूंगा। चले आ जाते हैं पेज नंबर 56 पे आ जाते हैं। वाटर रिसोर्सेस पासिबस, पेज नंबर 56, वर्कबुक 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टडी फोटोग्राफ ए पर्शियन व्हील। तो भाई फोटोग्राफ ए जो है ना वो पर्शियन व्हील है। स्टडी फोटोग्राफ ए व्हाट पर्शियन व्हील है। विद रेफरेंस टू, with reference to the photograph, explain how this machine is used for water supply। तो reference to photograph, आप इस मशीन को कैसे यूज कर सकते हैं वाटर सप्लाई के लिए। आज ये जरा शुरू हो जाए। नंबर 1 लेकिन अपने पास पर्शियन व्हील इज अ व्हील। पर्शियन व्हील इज अ व्हील which has buckets attached to it। Persian wheel is a wheel which has buckets attached to it। Persian wheel is a wheel which has buckets attached to it। Full stop। The wheel rotates with the help of a rope। The wheel rotates with the help of a rope। The wheel rotates with the help of a rope that is pulled by, that is pulled by draft power, that is pulled by draft power। Full stop। Again, the bucket goes inside the well and gets full of water। The bucket goes inside the well and gets full of water। The bucket goes inside the well and gets full of water। तो बकेट जो है वो वेल के अंदर जाता है और वो क्या होकर निकलता है? वो फुल ऑफ वाटर निकलता है। द बकेट गोज इनसाइड द वेल एंड गेट्स फुल ऑफ वाटर। The bucket goes inside the well and gets full of water। Full stop। आगे चलते हैं। What are the advantages and disadvantages of replacing this Persian wheel with a tubewell? तो मैं पर्शियन व्हील को रिप्लेस कर रहा हूँ ट्यूबवेल से, तो मुझे ट्यूबवेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने होंगे। आ जाए एडवांटेजेस पर। लेकिन द एडवांटेजेस आर, द एडवांटेजेस आर the advantages are that the tubewell is faster,
The advantages are that the tube well is faster and it will cover a large area and it will cover a large area. Full stop. The disadvantages are that it is expensive, and the maintenance cost is very high. That it is expensive and the maintenance cost is very high. That it is expensive and the maintenance cost is very high. That it is expensive and the maintenance cost is very high. आगे चलते हैं. Study figure 1 which shows the canal water supply in Pakistan. In which year was the water supply highest? तो वाटर सप्लाई कौन से ईयर में हाईएस्ट थी? तो अगर आप वाटर सप्लाई देखिए तो हाईएस्ट यहाँ पे है और ये कौन सा ईयर है? ये है 1999. तो इसका आंसर क्या होगा? 1999. और मैंने ब्रैकेट ओपन करके इसकी वैल्यू लिखी है 110 करके, जरूरत नहीं थी. आई हैव जस्ट रिटन इट. नेक्स्ट आ जाते हैं. हाउ मच हायर वाज दिस देन द सप्लाई इन 2002? अब अगर मैं 2002 की वैल्यू देखूं तो 2002 की वैल्यू है 79. तो 110 माइनस 79 कर दिया तो इसका आंसर क्या आ गया? 31 मिलियन एकड़ फीट. आपने प्लस माइनस करना होता है तो आपने जैसे ही प्लस माइनस करा 110 माइनस आपने 39 करा तो इसका आंसर क्या आ गया? 31 मिलियन एकड़ फीट. Why is there not enough water supply to meet from canals to meet the needs of all users? तो भाई वाटर सप्लाई इतना क्यों नहीं है कि हम सारे लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सकें? भाई अच्छा खासा पानी इवेपोरेट हो जाते हैं सनलाइट की वजह से. पानी की चोरी बहुत ज्यादा कॉमन है. पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड बहुत ज्यादा है. वाटर की मिसमैनेजमेंट होती है. वाटर की मिसमैनेजमेंट का मतलब है कि वाटर जाके एंटर हो जाता है अरेबियन सी में. तो जब वो एंटर होता है अरेबियन सी में तो पानी जाया होता है. लेकिन अपने पास ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. ह्यूज amount of water gets evaporated. Huge amount of water gets evaporated. Next, like theft of water is very common. Theft of water is very common. Theft of water is very common. Population बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी. लेकिन अपने पास the population is high, so the demand is also high. The population is high, so the demand is also high. पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी. नेक्स्ट लगे मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर. मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर. मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर. नेक्स्ट आ जाते हैं. Explain why water logging and salinity of soil
causes problem to the farmer. तो ये पूरा water logging और salinity का ना आपको lecture लिखना पड़ेगा. You have to write down the entire lecture of water logging and salinity. तो पूरा lecture लिखना है. पूरा lecture मैं copy में लिखवा चुका हूँ. अभी हम यहाँ भी लिख लेते हैं. And मैं चाहूंगा कि सबके सब आंसर लिखें अपने पास. आ जाए, शुरू हो जाए. Water logging and salinity are caused by seepage of water through the unlined canals such as perennial canals. When excess water is provided, the water table rises, full stop. A time will come when water will float on the surface. This is known as water logging. This is known as water logging. Salt particles will also reach the surface, full stop. लेके अपने पास overall soil will get damaged, and this will affect the farmers as they won't be able to practice agriculture. Full stop. It will be expensive for farmers to reclaim the soil. It will be expensive for farmer to reclaim the soil, full stop. Overall yield यानी production, yield को production कहते हैं, production will reduce and farmers will face the losses. 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 जो भी बेशरम मुझे भी मैसेज कर रहा है ना व्हाट्सएप पे, मैं मुंह तोड़ दूंगा. बेगैरत इंसान, मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ. पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे गप्पे नहीं मारो. फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट. मैं व्हाट्सएप लिखूंगा या मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, इडियट. नेक्स्ट आते हैं. वाटर पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द अर्बन एरिया. वाटर पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है. ठीक है भाई, बोल रहे हैं तो मान लेते हैं कि अर्बन एरिया है. लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू एग्जाम्पल explain some of the causes of this pollution and why it is a major problem to the people who rely on this water supply. देखिए, पानी गंदा होगा तो unfit for drinking होगा, unfit for agriculture होगा. मरीन लाइफ गंदी हो जाएगी, गंदे पानी में मरीन लाइफ रहेगी तो मरीन लाइफ मर जाएगी. पानी गंदा कैसे होता है? ऑयल स्पिल से होता है, डंपिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट से होता है, डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है. तो पानी गंदा होगा, और पानी गंदा हो गया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इफेक्ट होंगे. और बहुत सारे जो लोग इफेक्ट होंगे, आपको बताना है कि वो कौन लोग इफेक्ट होंगे.
समझ में आ रही है बात? तो इसको जरा देखते हैं हम क्या आंसर हो सकता है इसका। लेट्स ट्राई टू मेक एन आंसर। लेकिन अपने पास वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड by disposal of untreated human and industrial waste। इससे रेफरेंस मांगा, एग्जाम्पल मांगी है, तो रेफरेंस भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। अनट्रीटमेंट ह्यूमन वेस्ट, प्रॉपर सीवेज and sanitation is not available. Full stop. Untreated dumping of plastics, shopping bags will also cause water pollution. Will also cause water pollution. Full stop. Oil spills will also pollute the water. Full stop. Contaminated water will cause various health problems like cholera, typhoid, and malaria. It will be unsafe to use water for food and agriculture full stop. Marine life will get affected. Full stop. Fishes will die or they will get sick. Full stop. Overall ecosystem will be affected. Overall ecosystem will get affected. Overall ecosystem will get affected. Full stop. Copy करें please. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे आते हैं। स्टडी फिगर 4 which shows an irrigation system। तो भाई फिगर 4 एक इरिगेशन सिस्टम है। लिखा हुआ है नेम द इरिगेशन सिस्टम शोन ऑन फिगर 4। तो फिगर 4 टेक्निकली अपने को कारेज नजर आ रहा है, क्योंकि कारेज पानी को स्टोर करता है अंडरग्राउंड टनल्स में, और वो पानी को स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट से पानी अंदर जाता है, टनल्स के अंदर जाता है, एंड देन वो पानी आपके आगे एग्रीकल्चर ग्राउंड पे आते हैं। एक ही पर्पज है पानी को सेव करना। किससे सेव करना? इवेपोरेशन से सेव करना। तो नेम द इरिगेशन सिस्टम शोन ऑन फिगर 4, वो क्या हो जाएगा? कारेज हो जाएगा। लिख दे भाई कारेज।
मैं इसको थोड़ा तेज चलता हूँ क्योंकि मेजोरिटी अवाम ये कर चुकी होगी, सही है, मैंने हर जगह करवाया हुआ है। नेम एन एरिया ऑफ पाकिस्तान वेयर इट इज यूज, तो ये बलूचिस्तान में यूज होता है भाई, बलूचिस्तान। एक्सप्लेन हाउ दिस टाइप ऑफ वाटर प्रोवाइड्स, दिस टाइप ऑफ सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन दिस एरिया। तो वाटर टनल में जाता है, शाफ्ट के जरिए जाता है। पर्पस क्या है? पर्पस है वाटर को सेव करना इवेपोरेशन से। देन वाटर कहाँ पे जाता है? देन वाटर जाता है एग्रीकल्चर ग्राउंड पे, जाता है इरिगेशन के लिए जाता है, एग्रीकल्चर ग्राउंड पे जाता है। किसके लिए जाता है एग्रीकल्चर ग्राउंड पे? इरिगेशन के लिए जाता है। और इसके अलावा क्या है, ये सिस्टम जो होता है लैंडलॉर्ड्स ओन करते हैं। और टनल्स जो होते हैं अनसिमेंटेड होता है, यानी पानी जो होता है ना मडी शडी होता है। आए जरा लिखिए अपने पास, द वाटर गोज इनसाइड द टनल, the water goes inside the tunnel with the help of shaft. The water goes inside the tunnel with the help of shaft. The water goes inside the tunnel with the help of shaft. Full stop. Again, the purpose is to save water from evaporation. The purpose is to save water from evaporation. The purpose is to save water from evaporation. Then the water is transferred to the agriculture ground for irrigation. Then the water is transferred to the agriculture ground for the irrigation. Full stop. This system is owned by the landlords. This system is owned by the landlords, and tunnels are uncemented. And tunnels are uncemented. And tunnels are uncemented. Name a fruit crop grown in this area. एक fruit crop बताएं जो इस एरिया में ग्रो होता हो। इसको आप बोलते हैं dates, खजूरें। लिख दे भाई dates। आगे, study figure 5 which shows the result of land use survey in Pakistan. What percentage of land is cultivated? देखिए ये 63 है, 63 से स्टार्ट होके 100 पे गया ये। तो 63 और 100 का डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस होगा 37%। लिख दे भाई अपने पास 37%। What percentage of land is waste? तो ये waste स्टार्ट हो रहा है 49 से और खत्म हो रहा है 63 पे। 49 और 63 का डिफरेंस क्या हो गया? 49 और 63 का डिफरेंस क्या हो गया? 14% हो गया। तो भाई यहाँ पे 14% हो गया। ये वही वाला सवाल है पीछे, एक्सप्लेन हाउ सॉइल्स आर डैमेज बाय वाटर लॉगिंग सडनली। हम पीछे कर गया तो भी हमें करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन 3 रीजंस other than by water logging and salinity why over half of the land was not cultivated when the survey was made। तो जब हमने सर्वे किया ना तो 41% जमीन जो है ना वो नॉट कल्टिवेटेड है। 41% जमीन क्या है? 41% जमीन जो है वो नॉट कल्टिवेटेड है। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भाई ये 41% जमीन जो है ये नॉट कल्टिवेटेड क्यों है? भाई हो सकता है कुछ किसी जमीन पे हमने बिल्डिंग बना दी हो, मेरा घर बना हुआ, ऑफिस बना हुआ है, कोचिंग सेंटर बना दिया, प्रोफेशनल्स को बना दिया, वर्च को बना दिया भाई, तो इस वजह से भी है ना वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रही है। उसके अलावा हमने मोबाइल शॉप खोली, सर हमजा मोबाइल शॉप अलम के नाम से, तो वो मोबाइल शॉप खोली है तो वहां भी आप कल्टीवेशन नहीं करते हैं। मोबाइल मॉर्निंग प्रोग्राम खोल लिया हमने, स्कूल खोल लिया हमने, तो वहां भी आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। माउंटेनियस एरिया है, डेजर्टेड एरियाज है, तो मैंने साथ साथ थोड़ी सी ना अपनी पब्लिसिटी भी कर दी है। आप लोग तो करते नहीं है तो मैंने सोचा मैं ही कर दूं। आ जाइए जरा। तो हाफ ऑफ द लैंड कल्टीवेटेड क्यों था? क्योंकि माउंटेन्स हैं, क्योंकि माउंटेन्स के अलावा रिवर्स हैं, सी है, डैम बना हुआ है, घर बने हुए हैं, बिल्डिंग बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, स्कूल कॉलेज बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहां पे कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है। आए आंसर लिखते हैं। देखिए, द लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड, द लैंड इज नॉट
cultivated due to overgrazing by animals. Full stop. The soil gets infertile. So agriculture cannot be practiced. So agriculture cannot be practiced. Number two, secondly, huge amount of area, huge amount of area is covered by buildings. Huge amount of area is covered by buildings, comma, road, comma, school, and hospitals. Agriculture cannot be practiced in this area. Thirdly, a lot of area of Pakistan is covered by mountains and deserts. So again, it is difficult to practice agriculture. So it is difficult to practice agriculture. To 40 students in the class and not even 100 stories. Shame. चलो जी आगे चलते हैं. Question number 3. Study figure 1 which shows a map of the Pakistan. तो ये map of the Pakistan है. हमें नहीं करवाया तो ऑनलाइन में इसीलिए आंसर है तो मेरे हाथ को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा. H है, E है, F है, J है, G है. सवाल यहाँ पे आता है और सवाल क्या है? नेम द रिवर्स E, F एंड G. तो E हमारे पास इंडस है, F हमारे पास झेलम है और G हमारे पास रावी. हमने रिवर्स को याद किया था. I just can't read slowly. I just can't read shit. तो लिख ले अपने पास भाई. E is Indus, F is Jhelum, F is Jhelum, and G is Ravi. Indus, Jhelum, and Ravi. Indus, Jhelum, and Ravi. One of the dams, river Indus पे तरबेला है और रिवर झेलम पे मंगला है. इंडस पे तरबेला है, झेलम पे मंगला है. तो एच लिख दे भाई, एच पे लिखे तरबेला ऑन रिवर इंडस, तरबेला on river Indus, and Mangla on river Jhelum. And Mangla on river Jhelum. तो तरबेला river Indus पे और मंगला कौन है? river Jhelum पे. What is meant by the term A? Link canal. Link canal क्या होता है? It is a canal which diversifies water throughout the year from dams, yeah, from one river to the another. लेके अपने पास लेकिन लिंक कैनाल पे आए. लेकिन इट इज अ कैनाल which diversifies water from one river to the another. It is a canal which diversifies water from one river to the another. It is a canal which diversifies water. It is a canal which diversifies water from one river to the another.
नेक्स्ट आ जाए पेरिनियल कैनाल पे आ जाए। पेरिनियल कैनाल वो कैनाल होता है जो वाटर को सप्लाई करता है थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम डैम्स। लेकिन अपने पास इट प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम द डैम्स थ्रू आउट द ईयर। इट प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम द डैम थ्रू आउट द ईयर। सी पे आ जाए, इनंडेशन कैनाल पे आ जाए। इनंडेशन कैनाल पानी को डाइवर्सिफाई करता है, स्पेशली जब रिवर आपकी क्या करती है, स्पेशली जब रिवर आपकी ओवरफ्लो करती है। जब रिवर आपकी क्या करती है, जब रिवर आपकी ओवरफ्लो करती है। लेकिन इनंडेशन कैनाल पे लगे, इट इज अ कैनाल which diversifies water when the river overflows. It is a canal which diversifies water when the river overflows. When the river overflows. When the river overflows. सी पार्ट हम लोग नहीं करते तो सी पार्ट को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी टू पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान को लेकर। तो इंडस वाटर ट्रीटी की इंपॉर्टेंस पाए जाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, इट वाज साइंड, it was signed in 1960 full stop। लेकिन इंडिया stop the water supply of Pakistan so that Pakistan cannot practice agriculture, so that Pakistan cannot practice agriculture full stop। लेकिन finally after signing of this treaty, Pakistan got the control of Indus, Jhelum and Chenab full stop। Now Pakistan can save or store the water. Dams were constructed. Dams were constructed. Full stop. Dams were constructed. Full stop. Overall, agriculture, food production increased. Food shortages were overcome। full stop। तो भाई ये इंपॉर्टेंस है इंडस वाटर ट्रीटी की। फूड शॉर्टेजेस वर ओवरकम। फुल स्टॉप। डन। आगे चलते हैं। आ जाओ भाई, सवाल पे आ जाओ। डिस्क्राइब टू वेज in which the water supplies can be polluted। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप कर दे, डंपिंग ऑफ सीवेज वाटर कर दे, लेकिन डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डंपिंग ऑफ सीवेज वाटर, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके बाद लगे डंपिंग ऑफ सीवेज वाटर, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट और उसके बाद लगे डंपिंग ऑफ सीवेज वाटर, dumping of industrial waste and dumping of sewage water, dumping of industrial waste और उसके बाद लगे dumping of sewage water।
dumping of industrial waste and dumping of sewage water. Full stop. Next आ जाते हैं. For one of these ways, explain. For one of these ways, explain the problem caused by the pollution can be solved. तो आए जरा देख लेते हैं कि एक वे बताते हैं. अवेयरनेस क्रिएट कर लिखे निवास. क्रिएट अवेयरनेस. Create awareness. Create awareness. क्रिएट अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट आ जाए अपने पास. स्टार्ट अ कैंपेन कर दें. स्टार्ट अ कैंपेन. गवर्नमेंट एक काम कर ले. गवर्नमेंट जो है ना इन्वेस्ट कर दे सीवेज के अंदर. गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन improving the sewerage system. In improving the sewerage system. Full stop. Study figure 1, a map showing the major rivers of Pakistan. Locate the following two dams on the map. वार्सक डैम जो ना रिवर काबुल पे. वार्सक डैम जो रिवर कहाँ पे. रिवर काबुल पे. तो मैं यहाँ पे W मार्क कर दूंगा. वार्सक डैम जो है रिवर काबुल पे. मैंने यहाँ पे क्या मार्क कर दिया. W मार्क कर दिया. नेक्स्ट. Damir Basha under construction D. This dam is 150 kilometer downstream of Gilgit. यहाँ पे की दी हुई. यहाँ पे आप स्केल रखोगे. You will use a scale. और स्केल से आप देखोगे कि 150 जो किलोमीटर है वो कितने इंचेस में आ रहा है. स्केल से मेजर इंचेस. आप क्या मेजर करोगे. इंचेस मेजर करोगे या सेंटीमीटर मेजर करोगे. एंड देन गिलगित से आप डाउन स्ट्रीम पे आ जाओ. समवेयर अराउंड जहां पे मैंने टी लिखा हुआ है ना वहां पे आपका दामीर बादशाह डैम होगा. लेकिन आपको स्केल से ना मेजर करना पड़ेगा. यू विल यूज अ स्केल. आई विश आई हैव अ स्केल राइट नाउ हियर. आप स्केल से देखोगे 150 किलोमीटर कितने इंचेस हो रहा है. उसी इंचेस को या सेंटीमीटर को जाके ना आप गिलगित की डाउन स्ट्रीम के ऊपर जो है ना आप है ना रख के ना डी मार्क करोगे. सही है. सब मिलते जुलते हैं माशाल्लाह से. हर जगह मिलते हो. सेंटर से मिलते हैं. स्कूल से मिल रहे. आ ही रहा हूँ. छोड़ तो आया नहीं हूं मैं. तो अगर नहीं समझ में आया ना तो स्कूल के अंदर पूछ लीजिएगा. फिजिकली स्केल के साथ आइएगा. कोचिंग में भी स्केल के साथ आइएगा. आप स्केल के बगैर आएंगे ना तो उसी की किताब से मारूंगा मैं. अनफॉर्चुनेटली गलत बात. किताबों की इज्जत करनी चाहिए. आगे. What are the advantages of building a dam at a Damir Bhasha site? अबे भाई डैम के एडवांटेज बता देना सीधा सीधा. फ्लड को कंट्रोल करेगा. फ्लड को कंट्रोल करने के साथ साथ वाटर को स्टोर करेगा. एचईपी प्रोड्यूस करेगा. लिखिए अपने पास. The advantages of building dam is that the dam will store water. Full stop. More HEP will be produced. More HEP will be produced. Full stop. Load shedding will be reduced. Load shedding will be reduced with the help of dam. Floods will be controlled. With the help of dams, floods will be controlled. Floods will be controlled. Full stop. It will also provide a tourist spot. It will also provide a tourist spot. More foreign exchange will be earned. Full stop. It will also create
employment opportunities. It will also create employment opportunities. It will also create employment opportunities. Next आते हैं. Read the following article about the proposal to build a new dam, the Kalabagh on the river Indus, and at the point indicated on the map. Figure 1. A Kalabagh dam, a controversial issue है भाई. A Kalabagh dam, a controversial issue. Punjab wants the Kalabagh dam to be built, but there is opposition to the project from a section of the population in Sindh and Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. Those who are opposed to the dam argue that it might be beneficial for Punjab and harmful for the other provinces. ठीक है, बोल रहे हैं, बोलने दो, बोलने के तो पैसे नहीं है. नहीं, sorry, teachers के बोलने के पैसे होते हैं. Yes, बोलने के पैसे होते हैं. The Kalabagh dam issue is difficult to resolve at this stage. एक साला डैम नहीं बन के दे रहा, भाई को बनने दो प्राइम मिनिस्टर. देखो कैसी फैंटी लगाते हैं सबको. और कुछ तो टीचर्स को ही बैन करूंगा मैं, अयूब खान बनूंगा. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी की जगह पे बैन ऑन टीचर्स लगाऊंगा मैं. डिस्क्राइब द डिस्प्यूट्स ओवर वाटर अवेलेबिलिटी and use which can arise from the proposal to build dam at this site. तो भाई प्रॉब्लम क्या आ सकती है? सही है. और डिस्प्यूट क्या हो सकते हैं अगर हम डैम को बनाते हैं, और क्या इसका जो है ना यूज हो सकता है, उसको जरा देखते हैं हम. आज जरा शुरू हो जाते हैं. वाटर इज द मेजर disputes between the provinces. If the Kalabagh dam is constructed, then there is a possibility of unequal distribution of water. Punjab will get more water as compared to the other provinces. The KPK province will get sufficient water, but on the other hand, Sindh will suffer with the agriculture. There will be, this will also go there. This will also affects the mangroves as well. This will also affect the mangroves as well. तो ये क्या affect करेगा? ये mangroves को भी affect करेगा. This will also affect the mangroves as well. Full stop. This will also affect the mangroves as well. Full stop. वर्कशॉप्स का जो है ना मामला, जो सिलसिला है ना, मैं आप लोगों की इंडिविजुअल क्लासेस पे करूंगा. कल गुलशन जॉन नॉर्थ की क्लासेस है, तो कल गुलशन जॉन नॉर्थ पर डिस्कस करूंगा. आज वर्ष की और काशांश की हो गई है, उनको डिस्कस कर चुका हूँ. आप डिफेंस वाले जो हैं, प्रेसिशन और जेईएस वाले ना, उनसे मैं मंडे को मुलाकात करूंगा, तो मैं उनसे तब डिस्कस करूंगा. आई थिंक वी विल कीप इट टिल हियर. आज के लिए इतना ही काफी है. इतना बहुत सारा ख्याल रखेंगे. फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज.